Hello, this is an applied econometrics class. This is the first class in applied econometrics course. और थोड़ा सा हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स का आइडिया है। हम इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में नहीं, बिना मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन की सारी चीजें ऑलमोस्ट देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशंस क्या हैं, और अगर उन एजम्पशंस को ड्रॉप करा जाता है, जैसे अगर होमोस्केडास्टिसिटी की एजम्पशन को ड्रॉप करते हैं तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी है, नो ऑटो कोरिलेशन की एजम्पशन को ड्रॉप करते हैं तो ऑटो कोरिलेशन है, अगर मल्टी कोलिनियरिटी की एजम्पशन को ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। सो वी हैव सीन ऑल दैट. Now we are moving into a little ahead than what we have already done. हम एक तो इसको मैट्रिक्स में देखेंगे और इसके बाद देर आर सम टॉपिक्स इन इकोनोमेट्रिक्स, जैसे कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है इस कोर्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि 2SLS मॉडल क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मॉडल क्या है, ओमिटेड वेरिएबल बायस क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात होगी। सो यहां पर वी आर लुकिंग नाउ द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ द के वेरिएबल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल व्हिच इज y इज इक्वल टू x बीटा प्लस u। मेरे साथ साथ लिखिए, आसान चीज है, आप बस साथ में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारा के वेरिएबल रिग्रेशन फंक्शन है, के वेरिएबल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। I don't know what has happened to my pen. पता नहीं क्या हो गया है। मान लीजिए we have a k variable regression function, k variable population regression function। हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और k-1, इसको लिख देता हूं मैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और k-1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको इस कोर्स को करने से पहले थोड़ा सा यू विल हैव टू लुक एट द इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स रिकॉर्डिंग्स आल्सो। हम उन्हीं चीजों को देखेंगे, आई मीन फॉर एग्जांपल वी विल बी लुकिंग एट हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन एटसेट्रा, बट इन अ डीपर फैशन in this course. That is what this entire course is all about. मतलब, so you have x2, x3 and so on to xn, x scale it, right? So my population regression function, it could be written as yi equals to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i and so on to beta k xki plus ui। ui हमारी डिस्टर्बेंस टर्म है, I starting from 1 to 1, right? I starting from 1 to 1। बीटा 1 हमारी इंटरसेप्ट टर्म है, बीटा 1 is the intercept term। ये जो भी बीटा 2, बीटा 3 and so on to बीटा k हैं, these are nothing but the partial slope coefficients। and why we are saying these are partial slope coefficients, हम ये देख रहे हैं कि yi में कैसे कैसे चेंज होगा अगर बीटा 2 चेंज होगा, राइट। सो सॉरी, x2 चेंज होगा, x2i चेंज होगा, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। हम ये देख रहे हैं जैसे बीटा 2 के लिए हम ये देख रहे हैं कि yi में कैसे चेंज होगा अगर x2i में चेंज होगा, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। We have done the same thing in case of the multiple regression model also. So the interpretation there was also same.
that is del yi upon del x2i, del yi upon del x2i. So and what is the meaning of this population regression function? What is this telling us? It is giving us the mean values, mean value of y, or the expected value of y, given or conditional upon the fixed values of x2, x3, and so on to xn. Let me write this line. It gives mean or expected value. मैं सारा ये इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स की रिकॉर्डिंग में भी बता चुका हूँ. ये सब इनका क्या मतलब है? मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू of y, conditional upon the fixed values of x. So have a look at that if you have not seen that. Expected value. Y. Conditional upon the fixed in repeated sampling values of x1, x2, and so on to xk, and so on to xk. So basically what we are saying is that it is giving us the mean value of y given the fixed values of x2 and so on to xk, right? तो ये जो हमने लिख दिया है ना, we have the way we have written this out, ये actually ये है क्या? ये if you look at for this thing, it is the expression for the n equations. Beta k xk1 plus u1. मैं ये कह रहा हूं, ये जो हमने लिखा है this thing, this is actually coming from n simultaneous equations because we have written it for I starting from 1 to n. Beta 2. आप बस मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा. Beta k k2 plus u2 and so on. Beta n, right? देखो ये गलतियां तो होती ही रहेंगी. x2n, x3n. एक्चुअली जब बच्चे बैठे होते हैं ना सामने, तो वो आप कुछ भी गलती करते हैं एकदम से बता देते हैं. तो and I mean when we teach, I mean there are out to be some mistakes here and there. लेकिन जब वहां पे कोई बैठा ही नहीं है तो कई बार तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, तब मुझे पता लगता है कि ओ ये सही गलती कर दी. That happens. So we can write all this in the matrix form. We can write this as in matrix form. So how do we write this? y1, y2, so on to yn.
equals to, right, your one, x21, x31, so on to xk1, 1, x22, x32, so on to xk2, 1, xk2, yeah, your not xk2, it is x2n, x3n, xk. This is beta 1, beta 2, and so on to beta k. Plus u1, u2, and so on to un, and so on to un. So if you look at it carefully, this y, I can write all this as y matrix x, column matrix beta, plus this disturbance matrix or disturbance vector u. So this y is, it has n rows, one column. So it is n cross 1. This x has n rows, k columns. This is n cross k matrix. This beta has k rows, one column, right? And this has n rows, one column, n rows, one column. So if you look at it, this could now be multiplied because it has k columns. This X matrix has k columns and B matrix has k rows, right? So this is going to X beta, when multiplied together, it will have your n rows and one column, right? So it is going to be like that. So these are equivalent matrices. Okay. Now, above is the matrix representation of k variable linear regression model. Of k variable linear regression model, right? So this is y x beta plus mu, y x beta plus mu. Now we will come over to the assumptions of the classical linear regression model in matrix notation. Assumptions of classical linear regression model in matrix notation. In matrix notation, right? So the first assumption is
that the expected value of the disturbance term of the disturbance vector u is 0. That is, each of its element is 0. So more explicitly, we write E of u 0. इसको बोला क्या जाएगा? That expected value of the disturbance vector u, that is of each of its element is 0. Right? तो अब क्या कहने की चेष्टा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इन सबका एक्सपेक्टेशन लेंगे बेटा, ये 0 ही आएगा ना. ये तो हमारे को पता ही है हमारे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के assumption से कि जो एक्सपेक्टेशन है एरर टर्म की वो 0 है. That is 0. इसको मैट्रिक्स में इस तरह से लिखेंगे. We will write this thing as मैट्रिक्स. तो स्केलर नोटेशन में स्केलर नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन. मैं लिख लेता हूं बिकॉज ये मुझे बहुत जगह यूज करना होगा. स्केलर नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे? E of ui equals to 0 for all I 1 2 और for all I and so on to n, जो भी लिख रहे हो. मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे? E of u 0 where u and 0 both of them are n by 1 vectors. तो u भी बेटा n by 1 वेक्टर है. n रोज है 1 कॉलम है. ये भी n by 1 वेक्टर है. n रोज है 1 कॉलम है. ऐसे ही लिखना है एग्जाम में. where u and 0 are n by 1 column vectors zero being a null vector. Zero being a null vector. So when E of u, ui, uj is equal to sigma square when I equals to j. So basically what do we mean is E of ui square is equal to sigma square, not sigma square i's. So E of ui, uj is equal to sigma square when I equals to j is equivalently telling you it means E of ui square is equal to sigma square. ऐसे नहीं लिखते, ये होमोस्केडास्टिसिटी की assumption है. अगर हम इसी चीज को सिग्मा स्क्वायर आई लिख देते तो ये हेट्रोस्केडास्टिसिटी की assumption हो जाती. हम ही कह रहे हैं जब आई और जे इक्वल तो ये E of ui uj क्या बन जाएगा? E of ui square, that is sigma square, that is homoskedasticity assumption. E of ui uj equal to 0 when I is not equal to j, that is the assumption of no serial correlation or no autocorrelation. ui और uj इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. मतलब
ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. एरर टर्म इन पीरियड आई is not affecting the error term in period j. That is equal to 0. That is no autocorrelation assumption. हाँ, ये हम देख चुके हैं जब हमने assumptions करी थी नॉर्मल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर. अब इसी चीज को मैट्रिक्स नोटेशन में देखते हैं. E of u dash. U dash is the transpose of u. So u is the vector of the disturbance term, and then the transpose of that is equal to sigma square I. I is the identity matrix. Where I is n by n identity matrix. इसी बात को देखते हैं बेटा. ये कॉपी कर लेता हूं. So let's have a look at this thing here. बेटा, we know अगर हम E of u dash लिखें, u is the your k by 1 matrix, or k rows 1 column matrix of the disturbance term. U dash is the transpose of that, right? Sorry, what? If we write u of u dash, so u क्या था? U क्या था? It was the column matrix of the disturbance term. U dash क्या होगा? Transpose of that column matrix. बेटा इसको ऐसे ही लर्न करना है और ये ऐसे ही लिखा जाएगा पेपर में. कोई और अपनी भाषा यूज नहीं करनी है इसमें. You have to use this only in the paper. There is no other way. कुछ चीजें होती हैं जिसको ऐसे ही लिखा जाएगा पेपर में, तभी नंबर आएंगे. And the transpose of this column matrix is u1, u2, and so on to u1, right? तो इसका जब आप E of u dash बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? जैसे ये क्या है बेटा? This is n by 1 matrix. This is a column matrix. Sorry, this is the column matrix. So it has n rows, 1 column. This has 1 row, n columns, right? It has 1 row, n columns. So this is a row matrix or a row vector. This, you can call this thing as the column matrix or a column vector. This thing has row matrix or a row vector, right? Or a row vector. So अब निकालो E of u dash. How do you write this? u1, that is u1 square. E of u1, u2, so on to u1, un. Similarly, u2, u1, u2 square, so on to u2, un, and so on. un, u1, un, u2, un, un. And then you apply the expectations operator. Applying
expectations operator E to each element of the above matrix. आपको तो लिखना होगा, मैं तो ये कॉपी कर रहा हूं. Right. So now we apply expectations to each of them. Now we apply expectations to each of them. अब एक बात बताओ बेटा, E of U1 square क्या था? What was E of U1 square? That is the case of heteroscedasticity. Sorry, homoscedasticity. हाँ. अगर in case if I is equal to J, in this case I is equal to J, so E of U1 square is what? Homoscedasticity. E of U1 U2, right? This is going to be equal to 0. So sigma square 0 0 0 0 and this is 0 sigma square 0 0 0 sigma square and so on. Like this. But can I take sigma square common? Yes, I can. So this is 1 0 so on to 0 0 1 so on to 0 0 0 1. What is this? This is n by, there are n rows, n columns. So this is n by n identity matrix. This is n by n identity matrix where I is n by n identity matrix. So this is also called the this matrix. This along with this is called the variance covariance matrix of the disturbance term. Say this is A and its representation which is given in this. This is called the variance covariance matrix. Of the disturbances UI. Of the disturbances UI, right? जो जैसे अगर आप ये देखें, ये diagonal elements है ना बेटा, these are the diagonal elements. These diagonal elements are giving the variances, diagonal of this matrix, right? And the elements of diagonal
element. These are given the covariances. So these are giving you the variances. And these are giving you covariances. These are giving you covariances. So, और एक और चीज है, that is then you have the another assumption, assumption 3. Assumption 3. X2, X3, and Xk are non-stochastic or fixed. This was in scalar notation. In matrix notation, this guy could be written as the n by k matrix matrix capital X is non-stochastic. That is, it consists of a set of fixed numbers. That is, it consists of the set of fixed numbers. We have done these assumptions, right? हम ये सारी assumptions कर चुके हैं बेटा. So this actually means that the regression analysis is the conditional regression analysis. It is conditional upon the fixed values of the x variables. तो अगर आपको याद हो जो हमने करा, हमने ये कहा था कि हम डिफरेंट बहुत सारी फैमिलीज को ले लिया है हमने, और हमने उन फैमिलीज को ग्रुप कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर इनकम्स. ठीक है, तो जिन कुछ फैमिलीज की इनकम 100 रुपए थी मान लीजिए, तो उनका एक्सपेंडिचर कितना था. फिर हमने ग्रुप करा फैमिलीज को 200 रुपए की इनकम में, फिर उन फैमिलीज का एक्सपेंडिचर कितना था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो जो हमने 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए इस तरह से जो फिक्स्ड करा है, that is nothing but what is meant by those x2, x3, xk are fixed. They are non-stochastic, right? So we have done those assumptions. अगर कोई भी confusion हो तो आप एक बार देखिए उन assumptions को. Our regression analysis is conditional regression analysis. Conditional upon the fixed values of the x variables, right? And then you have the another assumption, which is this.
देयर इज नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग द एक्स वेरिएबल्स, और इसी को कहते हैं नो मल्टीकोलिनियरिटी की assumption. नो मल्टीकोलिनियरिटी की assumption क्या थी? नो मल्टीकोलिनियरिटी की assumption यही तो बता रही है आपको कि जो x1 x2 x3 है, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनके बीच के अंदर रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपस में. बिकॉज अगर x2 x3 x3 x4 ये अपने आप में ही रिलेटेड होंगे तो हम ये ना बता पाएंगे कि x2 सिर्फ x2 का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है, सिर्फ x3 का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है, राइट? तो इसको स्केलर नोटेशन में कैसे लिखा जाता है? देयर इज नो एग्जैक्ट रिलेशनशिप among the x variables. That is no multicollinearity. That is no multicollinearity. कोई multicollinearity नहीं है, राइट? और इसी बात को मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा? द रैंक ऑफ एक्स is px equals to k, where k is the number of columns in x. And k is less than the number of observations sorry, is less than the number of observations n. रैंक का मतलब क्या होगा? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन द मैट्रिक्स. अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कि कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका इन स्केलर नोटेशन दिस वुड एक्चुअली मीन दिस, that what you are saying is this, that there exist no set of numbers lambda 1, lambda 2, and so on to lambda k, not all zero, such that lambda 1 x1i. पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है. ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं बुक्स में, बट यू हैव टू डिसाइफर इट, यू हैव टू डिकोड इट. lambda 2 x2i plus lambda k xki equals to 0. जहां पे आप ये कह रहे हो कि ये जो x1i है, दिस इज x1i इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल i. मतलब ये जो पहला वाला कॉलम ऑफ ऑल वन से इंटरसेप्ट टर्म को दिखाने के लिए. और मैट्रिक्स नोटेशन में इसी को कैसे लिखा जाएगा? लैम्डा डैश x इक्वल्स टू 0. ये मैट्रिक्स नोटेशन में.
सो आप कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि x2 इक्वल्स टू 2x1, तो आप चाहे x2 लिखें या 2x1 लिखें, बात तो सेम ही है, तो ये डिपेंडेंट है। हम ये कह रहे हैं कि सारी की सारी इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होते तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस। थोड़ी सी चीजें मैट्रिक्स अलजेब्रा की आनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। हाँ, वेयर लैम्डा डैश is a 1 by k row vector, right? And x is k by 1 column vector. x is k by 1 column vector. तो हम ये कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी लैम्डास एग्जिस्ट नहीं, ऐसा कोई सेट ऑफ लैम्डास एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, right? If then in that case this is the case of no multicollinearity. This is the case of no multicollinearity. और अगर it comes out to be equal to 0, ऐसी कोई एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, तो हमें कहेंगे कि जो रिलेशन है वो कोलिनियर है, राइट? सो प्लीज राइट, इफ an exact linear relationship exists इस एक्सप्रेशन में, the variables are said to be collinear. इसका मतलब है कि इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में भी रिलेशन है. the variables are said to be collinear, right? If what is this, let me call this as C. If C holds, तो अगर नॉट ऑल, अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ तभी होल्ड कर रहा है जब ये सारे के सारे लैम्डा 0 हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो एक्स वेरिएबल्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर तो ये सारे के सारे 0 नहीं है, ठीक है, मान लीजिए मैं सिर्फ 2 ही को लेता, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2, कुछ ऐसा लेता, राइट, इक्वल्स टू दिस, समथिंग लाइक दिस. और जहां पे मैं ऐसे कह दूं कि जी लैम्डा 1 इज व्हाटएवर, ना लैम्डा 1 0 है ना लैम्डा 2 0 है, कोई रिलेशनशिप है इनके बीच में, तो हम x1 को x2 में से निकाल सकते हैं ना. मतलब अगर मैं कहता हूं कि 1x1 इज इक्वल टू 2x2, सो मैं अब चाहे x1 लिखूं या 2x2 लिखूं, बात तो सेम ही है. सो हम ये कह रहे हैं, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप होल्ड करे, मतलब ये 0 तब हो जब ये सारे के सारे लैम्डा 0 हो. जैसे कि अब अभी सारे, जब भी ऐसे n वगैरह की बात होती है ना, तो इसको n में सोचने की बजाय 2 में सोच लिया करो, ज्यादा चीजें आसान रहती हैं. कहने का तात्पर्य क्या, कि अगर हम ऐसे कहते हैं, ये रिलेशनशिप 0 तभी हो जब ये 0 हो, ऐसा, तो हम ये कहेंगे भैया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इफ C holds true, only if lambda 1 equals to lambda 2 and so on to lambda k all equal to 0, then x variables are said to be linearly independent, are said to be linearly independent. और अगर हमारे पास ऐसे k linearly independent कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? रैंक का मतलब है
द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज इन अ मैट्रिक्स। सो अगर हमारे पास ऐसे के, अगर हमें कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन तब होल्ड कर रही है जब λ1 λ2 एंड सो ऑन टू λk आर ऑल इक्वल टू 0। सो देयर आर k linearly independent variables, या k linearly independent variables। सो यहाँ पे कितने कॉलम्स linearly independent हैं? k। number of columns which are linearly independent are k, so the rank of the matrix is k, right? यही लिखा था यहाँ, कहाँ गया ये चीज, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रो x p x जो भी लिखना है आपको लिख लीजिए। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग मेंट बाय दीज assumptions। जो भी assumptions आपने स्केलर नोटेशन में लिखी है, उन्हीं assumptions को आपने मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा, ठीक है? तो आपने नो मल्टीकोलिनियरिटी की assumption लिखी जो मैंने रैंक वाली बताई, होमोस्केडास्टिसिटी और नो सीरियल कोरिलेशन की assumption लिखी जहां पे हमने वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स की assumption को देखा, राइट? ये पहली रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लंबी बिकॉज ये सारी assumptions आपको एक ही ग्रुप में बताई जानी थी, ठीक है? चलिए, थैंक यू बेटा, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।